So welcome students. इस क्वेश्चन में दिया है y is mod of mod x minus 1 and this function is differentiable for all r except which points. So इस function का what are the points of non-differentiability? Y is equal to mod of mod x minus 1. So this is a function involving mods. So हम critical points निकाल के let us try to analyze this function. So what are the critical points for this function? Critical points are x is equal to 0 क्योंकि अंदर mod x है, अंदर mod के अंदर x है, so x equal to 0 is a critical point, and mod x minus 1 is equal to 0. बाहर वाला mod के अंदर mod x minus 1 है, जब वो 0 होगा तभी critical होगा. So mod x is equal to 1. This implies x is equal to plus or minus 1. So you have three critical points: x is equal to 0, x is equal to 1, and x is equal to minus 1. So you have to analyze this function separately in different intervals. So first मैं क्या करता हूँ, ये सारे critical points को आप real number line में plot कर लीजिए, 0, plus 1 and minus 1. Real number line में plot किया. So now I have to solve this. I have to analyze this y separately in the separate intervals. So first, let x be greater than 1. अगर x 1 से बड़ा है तो mod x भी 1 से बड़ा होगा. Mod x भी 1 से बड़ा होगा. So mod x minus 1 is positive. So mod of mod x minus 1 is mod x minus 1, which is equal to x minus 1. So देख, so if x is greater than or equal to 1, mod x minus 1 is greater than or equal to 0. x 1 से बड़ा है तो mod x minus 1 will be greater than 0. This implies modulus of mod x minus 1 will be equal to mod x minus 1, क्योंकि बाहर वाला mod कुछ नहीं करेगा क्योंकि mod x minus 1 is positive. And what is mod x? x 1 से बड़ा है तो mod x is positive, that is mod x is x. So इस interval में my function will be x minus 1. Y is equal to x minus 1. And between 0 and 1, mod x will be equal to x. क्योंकि x positive है, mod x will be equal to x. So y will be equal to modulus of x minus 1. But x 0 और 1 के बीच में है, so x minus 1 will be negative. So mod of x minus 1 will be 1 minus x. Minus of x minus 1 और 1 minus x. So 0 और 1 के बीच में मेरा function जो है वो 1 minus x होगा. Y is equal. अब 0 और minus 1 के बीच में, 0 and minus 1 के बीच में y will be equal to mod x minus x हो जाएगा, mod of minus x minus 1. अब x 0 और minus 1 के बीच में है तो minus x minus 1 will be negative. Minus x minus 1 will be negative. So mod क्या हो जाएगा? Minus of minus x minus 1, that is equal to x plus 1. So यहाँ y is equal to x plus 1 हो जाएगा. When x is less than minus 1, so y will be equal to modulus of again minus x minus 1. अगर x minus 1 से छोटा है तो minus x 1 से बड़ा होगा. Minus x minus 1 is positive, so mod will directly go away. That is equal to minus x minus 1. So these are the different functions in different intervals. So इसको piecewise separate किया तो these are the four functions that you get. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. So let us try to draw the graph of this. So minus 1, 0, plus 1. So first 0 और 1 के बीच में ड्रॉ कर लेता हूँ. 0 और 1 के बीच में y is 1 minus x, लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन आएगा. So x equal to 0 पे 1 है. x equal to 0 पुट किया तो y is 1. x equal to 1 पुट किया तो y is 0. ठीक है. So you get a graph like this. इसके बाद अगर x greater than 1 है तो you get x minus 1. Again straight line graph, slope is plus 1, slope is plus 1, 45 degrees में ऊपर जाएगा. Then starts with x equal to 1 पुट किया तो 1 minus 1 is 0. यही से स्टार्ट होगा 1, 0 से ऊपर जाएगा at an angle of 45 degrees. Now what happens between minus 1 and 0? Straight line graph, have a positive slope. x equal to 0 पुट किया तो y is 1, x equal to 0 पे y 1 है, so this point is there.
x इक्वल टू -1 पुट किया तो y 0 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट से जाएगा, सो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. एंड व्हेन x इज लेस देन -1, -x -1 स्ट्रेट लाइन विथ अ स्लोप ऑफ -1. ठीक है, सो ग्राफ ऐसा होगा. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माई y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ mod x -1. सो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, जहां जहां शार्प एडजेस आएगा वहां डिफरेंशिएबल नहीं है. सो -1 पे, 0 पे एंड 1 पे. सो my y is equal to mod of mod x -1 is differentiable for all real numbers except these 3 values. So option A is the right answer. Thank you.